Hello students. So in the last video we have started with electromagnetic induction and we have seen what were the Faraday's experiment with respect to electromagnetic induction. So today let us start with laws of electromagnetic induction. Now there are mainly two laws that governs the phenomenon of electromagnetic induction. The first law is Faraday's law of electromagnetic induction and the second law is Lenz's law of electromagnetic induction. Okay, so the first law is Faraday's law and the second law is Lenz's law. Okay, so सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं what is Faraday's law. Now उससे पहले remember from Faraday's law we get the magnitude of the induced EMF. From Faraday's law we get magnitude of the induced EMF, whereas from Lenz's law we get direction of the induced EMF. From Faraday's law we get magnitude of induced EMF, whereas from Lenz's law we get the direction of the induced EMF. Okay, so first let us see Faraday's law. Now, when we say about Faraday's law of electromagnetic induction, there are generally two laws. Okay, the first law and the second law. Now, I am not going to write down the total law. Okay, मैं बोल दे रहा हूँ. You can note it down. इसको तुम लोग note पे ले सकते हो. Okay, so the first law states that whenever there is a change of magnetic flux linked with a closed circuit, or you can say in this way. Okay, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, then there is an induced EMF in it, which lasts as long as the change of magnetic flux takes place. This phenomenon is known as electromagnetic induction. So this is the first law. Okay, so first law हम लोगों ने पहले इसके बारे में हम लोग को मालूम है एक्सपेरिमेंट से that whenever the magnetic flux linked with a closed circuit keeps on changing, there is an induced EMF and hence induced current. If the change of magnetic flux stops, then there will be no induced EMF and no induced current. Yes or no? So this is only what the first law states. Now the second law, as I told you that from Faraday's law we will get the magnitude of the induced EMF. So from second law we will actually get the magnitude. Okay. So second law क्या बोलता है? The second law states that the magnitude of induced EMF is equal. The magnitude of induced EMF during the phenomenon of electromagnetic induction is equal to the rate of change of magnetic flux of the closed circuit. Okay, is equal to the rate of change of magnetic flux of the closed circuit. So this is what the first law and the second law of Faraday states. Okay. A second law you can do one thing. मैंने last में of the बोला ना, of the नहीं. You can I will just repeat the second law properly. Okay. So this law states that the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. Rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. Okay, so this is what the second law states. Now, as I told you that the first law, the second law is associated with the magnitude of the induced EMF. So from Faraday, we are actually getting the magnitude of induced EMF. Okay, and next, let us see what is Lenz's law. So, Lenz's law, this law states that the direction of induced current during the phenomenon of electromagnetic induction is such that it opposes the cause that produces it. Okay? So, ये तो हो गया law, इसको लिख लेना. जैसे कि मैंने बोला, it opposes the cause that produces it. So, induced current किसके वजह से cause होता था? Change of magnetic flux. That means जो induced current है, it has a tendency to oppose the change of magnetic flux.
ओके, उसको अपोज करने का टेंडेंसी रहता है। वो क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, वो जैसे कि मैंने बोला जब मैं लेंस लॉ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो मेनली हम लोग फैराडे लॉ से डील कर रहे थे, तो अभी फैराडे लॉ से ही रिलेटेड एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, दैट इज सो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ओके, तो सबसे पहले चलो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे एक यू शेप रेल लिया। ओके, आई हैव टेकन ए यू शेप रेल एंड हियर ऑन दिस यू शेप रेल आई हैव प्लेस्ड ए कंडक्टर। I have placed a conductor, say PQ. Okay, so ये जो लेंथ है ये मैंने ले लिया L, ठीक है। तो बात समझो हम लोगों ने क्या किया, हाँ, कंसीडर ए यू शेप कंडक्टिंग रेल, कंसीडर ए यू शेप कंडक्टिंग रेल which is placed in a uniform magnetic field. This cross are representing what? Uniform magnetic field. Placed on a uniform time dependent magnetic field, placed on a uniform time dependent magnetic field where the direction of the magnetic field is into the plane of the paper or board, you can say. Okay, where the direction of the magnetic field is normal into the plane. Okay, now we have taken a conductor PQ and placed it on the rail such that we can move it along the rail. ये rail के along हम लोग इसको move कर सकते हैं. Okay, so now we know that magnetic flux linked with a closed circuit is given by BA. Yes or no? The magnetic flux linked with a closed circuit is given by BA. Now, if we move this conductor PQ towards our left, say with velocity v, so देखो जो magnetic flux है, it is directly depending on the area. As we will move this conductor, what will happen? This area PQ, say this one I have marked as R and this one as S. So this area PQRS will keep on decreasing. Yes or no? If the area keeps on decreasing, obviously the magnetic flux linked with this closed loop will also keep on decreasing because it is directly proportional to area. Now, magnetic field decrease होना मतलब क्या समझे? Sorry, not magnetic field, magnetic flux. The magnetic flux also will what? Keep on decreasing. Now, magnetic flux decreases means what? We can say the magnetic flux linked with this closed loop or closed circuit is what? Changing. है कि नहीं? As we will move this conductor towards our left, the effective area of PQRS will change, will decrease. As a result, the magnetic flux linked with this one will also, linked with PQRS will also decrease. That means we can say that the magnetic flux associated with PQRS is changing. And we know that a changing magnetic flux, what happens? It can induce an EMF. So there will be induced EMF across the ends of the conductor PQ, and hence there will be a current, that will flow, there will be an induced current that will flow along the path PQRS. So there will be an induced current that will flow along the path PQRS. Now this side we have taken as L, let me take this side as B. Okay, let me take this side as B. So what is the formula for magnetic flux? BA. So can I write phi B equal to area? Area का जगह मैं लिख सकता हूँ length into breadth. So can I write LB
ओके, हियर B इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? B इज द चेंजिंग डिस्टेंस, यस और नो? अगर इसको इस तरफ लाओगे मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये B का जो डिस्टेंस है ये कम हो रहा है, अगर इस तरफ लेके जाओगे ये B बढ़ता जाएगा, L जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, and this magnetic field is also constant. So actually what is B? B is the changing distance. Okay, so L into B. So by Faraday's law, now जो फराडे का लॉ था, देखो मैंने वो एक्सप्रेशन देना मैं भूल गया था जब मैं लॉ समझा रहा था, ठीक है, मैं अभी एक्सप्रेशन दे रहा हूं। जो फराडे लॉ है, बाय फराडेज लॉ वी नो दैट जो सेकेंड लॉ था वो क्या दे रहा था? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, वहां पे क्या बोला था? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यस और नो? सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो फराडे का सेकेंड लॉ था उसका ये एक्सप्रेशन होगा, और इसमें अगर हम लोग लेंस लॉ लगा दे ये वाला हो गया, ये वाला फटाफट बना लो, मैं रफ करूंगा। डन। सो इसमें अगर मैं लेंस लॉ भी लगा दूं तो लेंस लॉ में क्या बोला था? जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है दैट इज इन सच ए वे दैट इट ऑपोजेस ओके इट्स कॉज। सो अगर ऑपोज कर रहा है तो वो हम लोग कैसे समझाएंगे? बाय पुटिंग ए माइनस साइन। माइनस साइन क्या समझा रहा है? दैट द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक माइनस साइन देंगे। तो ये तो मैंने समझाया, जब ये वाला लिखोगे मोशनल ईएमएफ, बाय फैराडे लॉ लिखने का जरूरत नहीं है, दो अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार फैराडे एक बार लेंस, डायरेक्ट लिखो बाय, वी नो दैट बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे एंड लेंस को कंबाइन करके हम लोग को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है। बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नो दैट E इक्वल्स टू माइनस डी फाई वी बाई डी टी। नाउ E हम लोग को क्या मिला, मतलब ईएमएफ हम लोग को क्या मिला? माइनस बी, ये फाई बी कितना मिला? बी एल इंटू बी, बी एल बी डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, नाउ बी एल जो है वो कांस्टेंट है, सो इट विल कम आउट, बी एल विल कम आउट, सो इट विल बी माइनस, और लेट अस से हियर इज द माइनस, सो हियर इट विल बी डी डी टी ऑफ B. Now what was B? Change in the distance, yes or no? Or you can say change in the position of the conductor. So ddt of change in position is what? Velocity. Velocity. So you will get E equals to minus BL minus V. Your velocity is given by minus V. Why? Because जैसे ही हम लोग इसको मूव कर रहे हैं, ओके, ये जो B है डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? ऐसे मूव कर लेते ना, तो जो B होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट velocity is in the decreasing direction of B. Decreasing direction of B. So minus minus we will get what? Plus. So we will get E equal to BLV. This is the expression for motional EMF. This is the expression for motional EMF. So what is motional EMF? The EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in the magnetic field is called motional EMF. Okay? देख लो एक बार अच्छे से।